Okay. So in our last class, we are discussing regarding different objectives of financial management. In context of that, we have discussed various objectives. What are the objectives we have discussed? We have discussed profit maximization objective and wealth maximization objective of financial management. What is profit maximization objective? I have told that all the decisions of the business should be taken in such a way that the profit of the business is maximized. What is प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस? प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? प्रीवियस क्लास में हम बात कर रहे थे प्रॉफिट कैसे निकालते हैं. प्रॉफिट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन इनफ्लोज एंड आउटफ्लो. प्रॉफिट इनफ्लो और आउटफ्लो का डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट. और वो प्रॉफिट को हमको मैक्सिमाइज करना पड़ता है. दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट हम बात किए थे एक वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव में. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव में हम डिस्कस किए थे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव टेल्स दैट all the decisions of the business should be taken in such a way that the wealth of the business is maximized. So what is wealth? मैं प्रीवियस क्लास में बात किया था. wealth क्या है? wealth is net present value. wealth का मतलब क्या है? प्रीवियस क्लास में बात किया था wealth is net present value. what is net present value? मैं बात किया था present net present value या NPV is equal to PV of inflow, present value of inflows minus present value of outflow. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो को माइनस करने से जो आता है हम उसको बोले नेट प्रेजेंट वैल्यू. अभी प्रीवियस क्लास में हम बात किए थे सपोज देयर इज ए प्रोजेक्ट. क्वेश्चन एक एग्जांपल सॉल्व किए थे. एग्जांपल क्या था? सपोज देयर इज ए प्रोजेक्ट. एक प्रोजेक्ट है. वो प्रोजेक्ट का लाइफ कितना है? लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज सपोज 5 years. वो प्रोजेक्ट अभी हम करेंगे तो हमारे हाथ से सपोज जाएगा 80,000. सो दिस 80,000 इज आवर आउटफ्लो. और वो प्रोजेक्ट सपोज 4 साल चलेगा. 1 2 3 4 4 years it will continue. Every year there will be some inflow from the project. इनफ्लो कितना होगा? सपोज फर्स्ट ईयर में इनफ्लो हुआ 20,000. सेकेंड ईयर में इनफ्लो हुआ 10,000. थर्ड ईयर में इनफ्लो हुआ 10,000. फोर्थ ईयर में इनफ्लो हुआ 50,000. सो दीज आर कैश इनफ्लोज, दीज आर कैश आउटफ्लोज. अगर हम प्रॉफिट निकालें इस बिजनेस का प्रॉफिट कितना होगा? सो प्रॉफिट इज इक्वल टू हमको पता है इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज. इनफ्लो से आउटफ्लो को माइनस कर देंगे जो आएगा वो प्रॉफिट होगा. आपका इनफ्लो क्या है? 20,000, 10,000, 10,000, 50,000. दीज आर योर इनफ्लोज. आपका आउटफ्लोज क्या है? 80,000 आउटफ्लो है. तो इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज. इनफ्लो है 20,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस 50,000. दीज आर आवर इनफ्लोज. तो टोटल इनफ्लो कितना हुआ? 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50 माइनस आउटफ्लो कितना है? 80,000. तो आपके बिजनेस में प्रॉफिट आएगा 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50. 40 प्लस 50 90,000 माइनस 80,000. आपका आया 10,000. दिस इज प्रॉफिट. बट profit does not consider one concept that is known as time value of money. What is time value of money? Time value of money tells that the 1 rupee of every year is not same. आज का 1 रुपया, 1 साल बाद का 1 रुपया, 2 साल बाद का 1 रुपया, 3 साल बाद का 1 रुपया, 4 साल बाद का 1 रुपया सेम नहीं है. यहाँ का 1 रुपया अलग है, यहाँ का 1 रुपये का वैल्यू अलग है, यहाँ का 1 रुपये का वैल्यू अलग है, यहाँ का 1 रुपये का वैल्यू अलग है. अगर चारों 1 रुपये का वैल्यू अलग है लेकिन हम क्या किए? चारों को एक साथ मिला दिए तो क्या होगा? वी
वायोलेट द प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। एडिशन क्या बोलता है, कंपैरिजन शुड बी ऑन सेम बेसिस, लेकिन हम क्या किए, ये एडिशन के प्रिंसिपल को ही वायोलेट कर दिए। तो हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं किए। टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोलता है चारों का 1 रुपया अलग अलग है, लेकिन हम सोचे आज का 1 रुपया, 1 साल बाद का 1 रुपया, 2 साल बाद का 1 रुपया, 3 साल बाद का 1 रुपया, 4 साल बाद का 1 रुपया, सब सेम है। इसीलिए हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं किए। दिस इज द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसको ओवरकम करने के लिए एक सेकेंड थ्योरी हमारा आया, जिसको हम बोले वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। सो व्हाट इज वेल्थ? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या बोलता है? Wealth maximization tells that wealth is equal to present value of inflow minus present value of outflow। wealth का मतलब क्या है? wealth is equal to present value of inflows माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो को माइनस करने से जो आएगा उसको हम बोलेंगे वेल्थ। तो अभी हमको पता है वेल्थ इज समथिंग व्हिच इज बेस्ड अपॉन प्रेजेंट वैल्यू। तो पहले हमको प्रेजेंट वैल्यू क्या है जानना पड़ेगा। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब किसी भी चीज का आज के डेट का वैल्यू, वैल्यू इन टूडेज टर्म, आज के डेट का वैल्यू। किसी भी फ्यूचर चीज का आज के डेट का वैल्यू कैसे निकालते हैं? सपोज मैं पूछूंगा 100 एक फ्यूचर वैल्यू है, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालो। तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू PVIF। ये याद रखिए, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर? ये कैसे निकलेगा? इसके लिए हमको कैश फ्लो को डिस्काउंट करना पड़ेगा। कैसे डिस्काउंट करेंगे? एक डिस्काउंट रेट हम देंगे। व्हाट इज आवर डिस्काउंट रेट? डिस्काउंट रेट हम इंटरेस्ट रेट को लेते हैं नॉर्मली। नॉर्मली द डिस्काउंट रेट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपके बिजनेस में कॉस्ट कैपिटल जिस रेट पर मिला है, दैट इज योर डिस्काउंट रेट। सपोज योर डिस्काउंट रेट इज 10%। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका मतलब हम बिजनेस में जो पैसा लगाए हैं वो पैसा 10% में लाए। तो हमको 4 साल का इनफ्लोज मिल गया। क्या क्या इनफ्लो? 20,000, 10,000, 10,000, 50,000। अभी इन सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? एक टेबल बनाएंगे। टेबल में पहले लिखेंगे ईयर, फिर लिखेंगे कैश फ्लो, फिर एक कॉन्सेप्ट निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। तो ईयर क्या है? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। 4 साल में आपका पैसा मिला है। फर्स्ट ईयर में कितना मिला है? आप अभी देखे थे, फर्स्ट ईयर में मिला था 20, सेकेंड ईयर में 10, थर्ड ईयर में 10, फोर्थ ईयर में 50। तो फर्स्ट ईयर में मिला है 20, सेकेंड ईयर में 10, थर्ड ईयर में 10, फोर्थ ईयर में 50। अभी इन सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब आज के डेट का वैल्यू। ये जो 20,000 मिला है वो 1 साल बाद मिला है, इसका आज के डेट का वैल्यू कितना है? सपोज मैं आपको बोलूंगा, आपको मैं 1 साल बाद 20,000 दूंगा। अभी कितना देने से आपको 20,000 जैसा लगेगा? अभी तुम बोलोगे अभी का वैल्यू 20,000 से कम होगा। आप अगर 18,000 देंगे आज और 20,000 1 साल बाद देंगे, वो सेम है। क्यों? क्योंकि 18,000 को मैं बैंक में रखकर 2,000 इंटरेस्ट मिल जाएगा। 18 प्लस 2 मिलकर कितना हो गया? 20। इसका मतलब 20,000 जो 1 साल बाद मिला है, उसका आज के डेट का वैल्यू उससे कम है। जो 10,000 2 साल बाद मिला है, उसका आज के डेट का वैल्यू उससे कम है। जो 10,000 3 साल बाद मिला है, उसका आज के डेट का वैल्यू उसका कम है। 4 साल बाद जो 50,000 मिला है, उसका आज के डेट का वैल्यू उससे भी कम है। तो आज के डेट का वैल्यू कितना है, कम है, उसको निकालने के लिए हमको एक कॉन्सेप्ट निकालना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। ये प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर को हम कैसे निकालते हैं? हम क्या करेंगे, सिंपली कैलकुलेटर में लिखेंगे 1 डिवाइड बाय
वन पॉइंट, जो आपका डिस्काउंट रेट है उसको लिख देना है। सपोज आपका डिस्काउंट रेट है 10%, तो क्या लिखूंगा, 1/1.10। अगर आपका डिस्काउंट रेट 15% होता तो आप लिखते 1/1.15। अगर आपका डिस्काउंट रेट 20% होता तो आप लिखते 1/1.20। अगर आपका डिस्काउंट रेट अगर आपका डिस्काउंट रेट 3% होता तो आप लिखते 1/1.03। इस तरह से आपको निकालना पड़ता। तो आप अगर कैलकुलेटर निकालेंगे तो इसका प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आपको निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे, हमको क्या करना है, 1 वो फैक्टर को निकालना है। तो कैलकुलेटर निकालिए, लिखिए 1/1.10। आपका कितना आता है, 1/1.1। आपका वैल्यू आता है 0.909। तो आपका वैल्यू आया 0.909। इसका मतलब 1 साल बाद का 1 रुपये का आज के डेट का वैल्यू है 90 पैसे। सिमिलरली आपको अगर सेकेंड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर निकालना है, जो कैलकुलेटर में फिगर आया है 0.909, उसको रहने दीजिए, उसमें और एक बार डिवाइड कर दीजिए 1.10। तो वैल्यू कितना आएगा, 0.9090909 जो है उसमें डिवाइड कर दीजिए 1.1। आपका वैल्यू आया 0.826। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर में वैल्यू निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। इसका मतलब फिर एक बार डिवाइड कर देंगे 1.10। इसका वैल्यू आएगा डिवाइड बाय 1.1, 0.751, 0.751। फिर एक बार फोर्थ ईयर का निकालेंगे तो फिर डिवाइड करेंगे 1.10 डिवाइड बाय 1.1। आपका आया वैल्यू 0.683। इसका मतलब है 1 साल बाद का 1 रुपये का आज के डेट का वैल्यू है 90 पैसा। 2 साल बाद का 1 रुपये का आज के डेट का वैल्यू है 82 पैसा। 3 साल बाद का 1 रुपये का वैल्यू है आज के डेट में 75 पैसा। 4 साल बाद का 1 रुपये का वैल्यू है आज के डेट में 0.683 पैसा। लेकिन आपको 1 साल बाद तो 1 रुपया नहीं मिला है, 1 साल बाद 20,000 मिला है। तो 20,000 का आज के डेट का वैल्यू कितना होगा, कैसे निकालेंगे, वो फोर्थ कॉलम में निकालेंगे। क्या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो इज इक्वल टू कैश फ्लो इंटू पीवीआईएफ। इसका मतलब क्या करेंगे, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो डी जो फोर्थ कॉलम होगा दैट विल बी बी इंटू सी। बी कॉलम को सी कॉलम में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू निकल जाएगा। बी कॉलम को सी कॉलम में मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा हुआ है, 20,000। 20,000 का प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगा, 20,000 इंटू 0.909, 0.909। इसका मतलब 18,180। इसका मतलब 1 साल बाद 20,000 पाना जो है आज के डेट में 18,180 पाना वही। सिमिलरली 2 साल बाद 10,000 पाना जो है आज के डेट में कितना पाना वही है। तो निकालेंगे 10,000 इंटू 0.826, 0.826। आपका आया 8260, 8260। फिर क्या करेंगे, थर्ड थर्ड ईयर के एंड में 10,000 मिला है, तो उसका आज के डेट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसी हिसाब से 10,000 इंटू 0.751, 0.751। आपका आया 7,510 रुपया। फिर क्या करेंगे, फोर्थ में 50,000 का आज के डेट का वैल्यू कितना होगा, 50,000 इंटू 0.683, 683। उसका वैल्यू आ गया 34,150, 34,150। ठीक है, दीज आर दी वैल्यूज। ओके।
तो टोटल के ऊपर आपको कितना पैसा मिल रहा है, देखिए टोटल के ऊपर आपको कितना पैसा मिल रहा है। टोटल के ऊपर आज के डेट में आपको मिलेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। क्या करेंगे, चारों कॉलम को मिला देंगे, चारों कॉलम को मिला दो, कितना आता है देखते हैं। फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है कितना, 18,180 प्लस, सेकेंड कॉलम में 8,260, थर्ड कॉलम में है 7,510, फोर्थ कॉलम में है 34,150, टोटल मिलाने से आपका आ गया 68,100। इसका मतलब ये प्रोजेक्ट को करेंगे आज के डेट के हिसाब से आपको 68,100 मिलेगा। आप जो सोचे थे एक्चुअली मिल रहा है कितना, 50, 10, 60, जो 70, 20, 90,000 मिल रहा है, दैट इज विदाउट कंसिडरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। लेकिन जिसको थोड़ा फाइनेंस की नॉलेज है वो क्या करेगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करके आज के डेट के हिसाब से मेरे को मिला कितना, 68,100। लेकिन आज के डेट के हिसाब से मेरे हाथ से जाएगा कितना, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। बेटा ये प्रोजेक्ट करेंगे तो हाथ से कितना जाएगा, एग्जांपल लिए थे, हाथ से जाएगा, क्वेश्चन बोल रहा था ये प्रोजेक्ट करने से हाथ से जाता है 80,000, कैश आउटफ्लो है 80,000, कैश आउटफ्लो 80,000, इनफ्लो 20, 10, 10, 50, तो 80,000 जाएगा, आएगा 68,100, जाएगा 80,000। तो व्हाट विल बी माई नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू या एनपीवी। NPV is the difference between present value of inflow and present value of outflow। ये होगा -911,900। इसका मतलब ये प्रोजेक्ट करेंगे, मेरा जो बिजनेस का वेल्थ है, एनपीवी का दूसरा नाम है वेल्थ। देयर विल बी वेल्थ, नेगेटिव वेल्थ विल बी क्रिएटेड इन माय बिजनेस। ये प्रोजेक्ट करने से मेरे बिजनेस में नेगेटिव वेल्थ क्रिएट होगा। नेगेटिव वेल्थ क्रिएट होगा मतलब हम कोई भी आदमी नेगेटिव वेल्थ क्रिएट करना चाहता है क्या, नेगेटिव वेल्थ का मतलब वेल्थ इरोजन। वेल्थ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वेल्थ घट जाएगा, वेल्थ इरोजन। वेल्थ इरोजन कब होता है, जब नेगेटिव वेल्थ आता है। नेगेटिव वेल्थ कब आता है, नेगेटिव वेल्थ जब आता है जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो को कंपेयर करने से आउटफ्लो ज्यादा होता है, इनफ्लो कम होता है, या एनपीवी नेगेटिव में आता है। तो इस तरह का प्रोजेक्ट को हमको रिजेक्ट कर देना है, हमको करना नहीं है। हम अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव लेते, हम ये प्रोजेक्ट को कर लेते, सोचते 10,000 का फायदा हो रहा है, लेकिन एक्चुअली 11,900 का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। नुकसान मतलब अपना वेल्थ घट रहा है। तो आपको कौन सा प्रोजेक्ट को करना चाहिए, जो प्रोजेक्ट में वेल्थ एडिशन हो। वेल्थ एडिशन कब होगा, वेल्थ एडिशन तब होगा when there will be positive wealth created in the business। पॉजिटिव वेल्थ बिजनेस में कब आएगा, जब आपके बिजनेस में एनपीवी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो देयर विल बी वेल्थ एडिशन। जिस प्रोजेक्ट में वेल्थ एडिशन होता है उस तरह का प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें, और जिस प्रोजेक्ट में वेल्थ इरोजन होता है उसको रिजेक्ट करें। दिस इज नोन एज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव बोलता है हमारे बिजनेस में जितना डिसीजन है उस हिसाब से लेंगे जिस हिसाब से हमारा वेल्थ क्या होगा, एडिशन होगा, और मैक्सिमम वेल्थ एडिशन जहां पर हो रहा है उस प्रोजेक्ट को हमको करना है। सपोज आपका 3 प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी। 3 प्रोजेक्ट में से तीनों का एनपीवी दिया है। ये प्रोजेक्ट करेंगे तो 5,000 एनपीवी आएगा। एनपीवी क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। प्रोजेक्ट बी का है 10,000, प्रोजेक्ट सी का है 8,000। आपको कौन सा प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है, जो प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा वेल्थ एडिशन होता है उसको एक्सेप्ट करना है। दिस इज वेल्थ। एनपीवी का मतलब है वेल्थ।
वेल्थ कहां पर मैक्सिमाइज होगा, ये वाला प्रोजेक्ट में। तो आपको इसको एक्सेप्ट करना है। दिस इज नोन एज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव बोलता है ऑल द डिसीजंस ऑफ द बिजनेस शुड बी टेकन इन सच ए मैनर दैट द वेल्थ ऑफ द बिजनेस इज मैक्सिमाइज्ड। एंड व्हाट इज वेल्थ? वेल्थ मींस एनपीवी। एनपीवी का मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अभी आप देखिए हमारा जो कंपनी होते हैं वो दो तरह का होता है। एक कंपनी होता है प्राइवेट कंपनी। व्हाट इज ए प्राइवेट कंपनी? प्राइवेट कंपनी एक ऐसा कंपनी है जिसमें पैसे का जुगाड़ वो अपने आप करते हैं। दे डू नॉट गो फॉर पब्लिक इशू। डू नॉट गो फॉर पब्लिक इशू। पब्लिक इशू मतलब वो पब्लिक से पैसा नहीं मांगते। तो प्राइवेट कंपनी का आईपीओ कभी नहीं है हुआ होगा। आईपीओ एफपीओ पब्लिक ऑफर नहीं होगा। लेंसकार्ट पहले प्राइवेट कंपनी था, अभी पब्लिक कंपनी बना, उसका आईपीओ आया है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो प्राइवेट कंपनी पैसे के लिए पब्लिक के पास नहीं जाता है। कहां जाता है? वो अपना प्राइवेट अरेंजमेंट करता है। प्राइवेट अरेंजमेंट ऑफ फंड। प्राइवेट अरेंजमेंट ऑफ फंड्स। इसका मतलब उसका शेयर आर नॉट पब्लिकली अवेलेबल। उस कंपनी का शेयर खरीदना चाहेंगे, मिलेगा नहीं, पब्लिकली अवेलेबल ही नहीं। प्रमोटर के पास जाकर हिस्सा ले सकते हो, कुछ कर सकते हो। प्राइवेट कंपनी हुआ। व्हाट इज पब्लिक कंपनी? पब्लिक कंपनी क्या है? पब्लिक कंपनी एक ऐसा कंपनी है जो पैसे के लिए पब्लिक के पास जाता है कि गो फॉर पब्लिक इशूज। जिसका पब्लिक इशू आता है वो पैसे के लिए किसके पास जाता है कि अरेंज फंड्स फ्रॉम पब्लिक। बेटा जब भी कंपनी छोटा होता है, नया नया होता है, वो प्राइवेट कंपनी होता है। एक बार कंपनी एस्टेब्लिश हो जाता है तो वो पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होता है और वो अपना शेयर पब्लिक को देता है। अभी मैं एक कंपनी बनाऊंगा विश्व लिमिटेड, कोई जानता नहीं है, उसका शेयर मैं इश्यू करूंगा, कोई उसको खरीदेगा ही नहीं। तो मेरे को पहले बिजनेस को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, फिर मैं अपना बिजनेस का पब्लिक इशू आईपीओ लाऊंगा तो वो कोई खरीदेगा, नहीं तो कोई खरीदेगा नहीं। उस कंपनी का शेयर को कोई पूछेगा नहीं। तो पब्लिक कंपनी पैसे के लिए पब्लिक के पास जाता है, प्राइवेट कंपनी पैसे का खुद जुगाड़ करता है। ठीक है, पब्लिक कंपनी दो तरह का होता है बेटा। प्राइवेट कंपनी में शेयर आर नॉट ट्रांसफरेबल। शेयर्स आर नॉट इजीली ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल का मतलब क्या है? एक आदमी से दूसरे आदमी के पास शेयर जा नहीं सकता है। तेरे पास किसी प्राइवेट कंपनी का शेयर है, तू मेरे को देना चाहता है, बहुत रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है, लेकिन पब्लिक कंपनी का शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। इसका मतलब तेरे पास किसी पब्लिक कंपनी का शेयर है, तू मेरे को देना चाहता है, दे सकता है, इजीली दे सकता है। कुछ प्रोसीजर है, प्रोसीजर फॉलो करेंगे। मतलब प्राइवेट कंपनी का शेयर इजीली मार्केट में बाई सेल नहीं होता है, पब्लिक कंपनी का शेयर मार्केट में बाई सेल होता है। बेटा ठीक है, पब्लिक कंपनी का शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल। ये जितने इंडिया में लगभग 11 लाख कंपनी है, उसमें से 11 लाख कंपनी में से 10 लाख कंपनी प्राइवेट है, 10 लाख प्राइवेट कंपनी, 1 लाख होगा कौन सा कंपनी? पब्लिक कंपनी। बेटा प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी ये गवर्नमेंट के थ्रू में नहीं है। प्राइवेट कंपनी जो फंड का जुगाड़ अपने आप करता है, जहां पर शेयर ट्रांसफरेबल नहीं होता है, उसको बोलते हैं प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या है? जो पैसे के लिए पब्लिक के पास, हम लोगों के पास आता है और उसका शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है। इंडिया में 11 लाख के आसपास कंपनी है, 10 लाख प्राइवेट कंपनी है, 1 लाख पब्लिक कंपनी।
वो 1 लाख पब्लिक कंपनी में से कुछ का शेयर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में मिलता है। जिसका शेयर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में मिलता है उसको बोलते हैं लिस्टेड पब्लिक कंपनी। व्हाट इज ए लिस्टेड पब्लिक कंपनी? जिस कंपनी का शेयर स्टॉक एक्सचेंज में मिलता है, स्टॉक एक्सचेंज में मिलता है उसको बोलते हैं लिस्टेड पब्लिक कंपनी। और जिस कंपनी का शेयर स्टॉक एक्सचेंज में नहीं मिलता है उसको बोलते हैं अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। नॉट अवेलेबल इन स्टॉक एक्सचेंज। अनलिस्टेड कंपनी का शेयर तुम खरीद सकते हो, उतना टेंशन नहीं होगा, लेकिन तुम बेचना चाहते हो फिर जाकर किसी और को पकड़ना पड़ेगा। लेकिन लिस्टेड पब्लिक कंपनी का शेयर, इंडिया में जो लिस्टेड पब्लिक कंपनी है लगभग 5-6 हजार है। मतलब 11 लाख कंपनी में से 10 लाख प्राइवेट, 1 लाख पब्लिक। 1 लाख में से 6 लाख, 6 हजार लिस्टेड, 94,000 कौन सा है? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। तो जो 6 हजार पब्लिक कंपनी है जिसका शेयर स्टॉक एक्सचेंज में मिलता है उसको बोलते हैं लिस्टेड कंपनी या लिस्टेड पब्लिक कंपनी। एग्जाम्पल, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RIL, is a listed public company. Tata Consultancy Limited, TCS, Wipro is a public listed public company. इसका शेयर मार्केट में मिलता है। तुमको चाहिए रिलायंस का ओनर बनना है, रिलायंस का शेयर खरीद लो, ओनर बन जाओगे कल से। टीसीएस का ओनर बनना है, टीसीएस का शेयर खरीद लो, ओनर बन जाओगे। टीसीएस का शेयर मार्केट में मिलता है, विप्रो का शेयर मार्केट में मिलता है। ठीक है, आप उसका शेयर खरीदे। तो जो लिस्टेड पब्लिक कंपनी होता है उसका शेयर मार्केट में परचेज सेल डेली बेसिस पर होता है। तो अगर परचेज सेल होता है तो उसका रेट ऊपर नीचे होता है। बेटा, किसी भी चीज का रेट कब ऊपर जाएगा? जब ज्यादा लोग उसको खरीदेंगे, कम लोग बेचेंगे तो उसका रेट ऊपर जाएगा। जैसे आलू का रेट कब बढ़ेगा? जब सब लोग आलू खरीदना चाहते हैं, बेचने वाले कम है तो आलू का रेट बढ़ेगा। आलू का रेट कब घटेगा? बेचने वाले ज्यादा हैं, खरीदने वाले नहीं है तो रेट घटेगा। उसी तरह से रिलायंस कंपनी का शेयर का वैल्यू कब बढ़ेगा? जब बहुत सारा लोग रिलायंस का शेयर खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है, बहुत सारा बाइंग ऑर्डर दे रहे हैं, सेलिंग ऑर्डर उतना नहीं है, तो क्या होगा? रिलायंस का प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जब भी बाइंग प्रेशर किसी शेयर में आता है, बाइंग प्रेशर मतलब बायर ज्यादा होते हैं, तो क्या होता है? उसका वैल्यू बढ़ता है। बाइंग प्रेशर से वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज करेगा, शेयर का प्राइस बढ़ेगा। अगर सेलिंग प्रेशर आता है, व्हाट इज सेलिंग प्रेशर? अगर बहुत सारा लोग उस कंपनी का शेयर को बेचने चाहते हैं तो उसका वैल्यू, शेयर वैल्यू क्या होगा? कम होगा। ठीक है, ओके। अभी मैं समझाना चाहता हूं, सपोज एक कंपनी का, सपोज रिलायंस है, रिलायंस में सपोज 5 करोड़ शेयर है, 5 करोड़ शेयर है। शेयर का मतलब क्या है? वो अपना कैपिटल का छोटा छोटा पार्ट करके बेचा है। शेयर का मतलब हिस्सा। बिजनेस में वो 5 करोड़ हिस्सा किया है। एक एक हिस्से को क्या बोलते हैं? एक एक शेयर। शेयर इज ए पार्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी। शेयर इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी। बात समझ में आ गया? तुम शेयर खरीदोगे, इसका मतलब तुम बिजनेस का एक पार्ट खरीद रहे हो। शेयर मीन्स पार्ट। आपका बिजनेस को, रिलायंस अपना बिजनेस का कितना पार्ट किया है? 5 करोड़ पार्ट किया है, और हर एक पार्ट मिल रहा है। तुम अगर 2 पार्ट खरीदना चाहते हो, अभी मार्केट में रेट चल रहा है सपोज 200 रुपया,
तो तुम 2 पार्ट खरीदना चाहते हो, 200 दोगे, 400। मैं 5 पार्ट खरीदना चाहता हूँ, 5 शेयर खरीदना चाहता हूँ, मेरे को 5 देना पड़ेगा, 200 इंटू 5 1000। बेटा समझ में आ रहा है? तो 5 करोड़ शेयर्स हैं, एक का प्राइस क्या है, तो नंबर ऑफ शेयर्स हैं कितना, 5 करोड़। और सेलिंग प्राइस पर शेयर कितना है, सेलिंग प्राइस या मार्केट प्राइस, मार्केट में अभी प्राइस क्या चल रहा है, 200। तो 200 इंटू 5 करके टोटल हो गया कितना, 1000 करोड़। तो ये जो 1000 करोड़ है, ये रिलायंस का हो गया वैल्यू, टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी। रिलायंस का टोटल वैल्यू कितना है, टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी है 1000 करोड़। इसको हम टेक्निकल टर्म में बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। क्या बोलते हैं? तो रिलायंस का मार्केट कैप कितना है, 1000 करोड़। इसी तरह से इंडिया में 5000 कंपनी है, सबका मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालेंगे, जिसका सबसे ऊपर है उसको 1 नंबर में रखेंगे, 2 नंबर में, 3 नंबर में, इस तरह से 5000 कंपनी को रखें। ठीक है? तो कौन से बेसिस पर रखे, मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर। व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर। इसे सीरियल कर दिए, सीरियल करने से जिसका सीरियल सबसे ऊपर में है, टॉप 100 कंपनीज को हम बोलते हैं लार्ज कैप कंपनीज। लार्ज कैप मींस कैपिटलाइजेशन, लार्ज कैप कंपनीज। लार्ज कैप कंपनीज क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो 1 नंबर से 100 नंबर के रैंक में आया है, जो जो कंपनी इंडिया में, उसको हम बोलते हैं लार्ज कैप कंपनी। 100 में से 250 के बीच में जो आता है, उसको बोलते हैं मिड कैप कंपनी। व्हाट इज मिड कैप कंपनी, मिड कैपिटलाइजेशन कंपनी। रैंक में 100 में से 250 के अंदर, 250 से 500 के अंदर जो आता है, उसको बोलते हैं स्मॉल कैप कंपनीज। तो टॉप 500 शेयर्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन सा, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनीज। तो तुमको अगर पैसा इन्वेस्ट करना है इंडिया के टॉप 500 कंपनी में, तुम अगर पैसा लगाओगे, इसका मतलब जब इंडिया बढ़ेगा तो आपका पैसा बढ़ेगा, इंडिया ग्रो करेगा तो ये 500 कंपनी तो ग्रो करेंगे। कोई कंपनी में लॉस हो सकता है, कोई कंपनी में प्रॉफिट होगा, ऑन एन एवरेज आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर इंडिया बढ़ रहा है तो 500 कंपनी बढ़ेंगे, तो आप 500 कंपनी में इन्वेस्ट कर लीजिए, टॉप 500 में। बेटा समझ में आ रहा है? अच्छा, उसके नीचे जो रहे उसको हम बोलते हैं माइक्रो कैप कंपनीज। माइक्रो कैप मतलब वो बहुत छोटे कंपनी है। ठीक है? और जो पूरा गया गुजरा कंपनी है, उसको बोलते हैं हम पेनी स्टॉक्स। तो किसी को ये पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये छोटे मोटे स्टॉक है जिसका रेट 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया वाला शेयर है, उसको बोलते हैं पेनी स्टॉक। तो कोई भी इन्वेस्टर को इधर लार्ज कैप में जाना है। लार्ज कैप में क्या है, रिस्क सबसे कम है, लीस्ट रिस्क, लीस्ट रिटर्न। यहां पर मॉडरेट रिस्क, कहां पर, मिड कैप में लगाओगे मॉडरेट रिस्क, मॉडरेट रिटर्न। स्मॉल कैप में पैसा लिखाओगे हाई रिस्क, हाई रिटर्न। माइक्रो कैप में लगाओगे वेरी हाई रिस्क, रिस्क मतलब पूरा पैसा जा सकता है, वेरी हाई रिस्क, वेरी हाई रिटर्न। और इसमें वेरी 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 हाई रिस्क और वेरी 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 हाई रिटर्न होगा। एक का 100 करना चाहते हैं, पेनी स्टॉक में जाए, लेकिन 100 में से एक बार ही मिलेगा, बाकी 99 बार पैसा गया।
तो पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। माइक्रो कैप में रिस्की है। किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो टॉप 500 कंपनीज में पैसा डाल सकता है। बात समझ में आ रही है? लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। ठीक। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन में समझाया। मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे आता है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर। अच्छा, आप अगर अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट लाएंगे किसी कंपनी में, अच्छा प्रोजेक्ट का मतलब क्या है? अच्छा प्रोजेक्ट का मतलब है जिस प्रोजेक्ट से वेल्थ एडिशन होता है। अच्छा, वेल्थ एडिशन का मतलब क्या है? जिस प्रोजेक्ट में एनपीवी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। एनपीवी पॉजिटिव होगा तो उस तरह का अच्छा प्रोजेक्ट लाएंगे। सब लोग आपके कंपनी का शेयर को क्या करना चाहेंगे? जो कंपनी अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट ला रहा है, ऐसा प्रोजेक्ट ला रहा है जैसे कंपनी में वेल्थ एडिशन हो रहा है, सबको वो कंपनी का शेयर खरीदने में इंटरेस्ट होगा। अगर खरीदने में इंटरेस्ट होंगे, पीपुल विल बी इंटरेस्टेड इन बाइंग। तो अगर सब लोग बाइंग में इंटरेस्टेड हैं तो कौन सा प्रेशर क्रिएट होगा? बाइंग प्रेशर क्रिएट होगा। अगर बाइंग प्रेशर क्रिएट हुआ तो उसका शेयर प्राइस क्या होगा? मार्केट प्राइस ऑफ शेयर क्या होगा? बढ़ेगा। मार्केट प्राइस पर शेयर इंक्रीज। मार्केट प्राइस पर शेयर इंक्रीज होने से उस कंपनी का क्या बढ़ेगा? मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, दैट इज नोन एज मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन को मैं क्या बोलता था? टोटल वैल्यू। उस कंपनी का वैल्यू बढ़ेगा। तो आपको उस तरह का डिसीजन कंपनी में लेना है जिससे आपके कंपनी का शेयर प्राइस बढ़े और अल्टीमेटली आपके बिजनेस का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़े या बिजनेस का टोटल वैल्यू बढ़े। इसीलिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को भी हम बोलते हैं वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। क्यों वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वैल्यू मैक्सिमाइजेशन होता है? जब भी आप वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करते हैं, आप पॉजिटिव एनपीवी वाला प्रोजेक्ट को ऐड करते हैं और इससे लोग आपके कंपनी का शेयर को खरीदना चाहते हैं। लोग जब कंपनी का शेयर को खरीदना चाहते हैं, उस कंपनी का मार्केट प्राइस पर शेयर इंक्रीज होता है। मार्केट प्राइस पर शेयर इंक्रीज होने से उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन या टोटल वैल्यू इंक्रीज होता है। तो इन केस ऑफ listed public company, wealth is reflected in market value। listed public company में wealth कैसे रिफ्लेक्ट होगा? वेल लिस्टेड पब्लिक कंपनी में वेल्थ को देखना है तो क्या देखना है? वेल्थ इज रिफ्लेक्टेड थ्रू मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसका मतलब आप एक कंपनी बनाए हैं, उसका मार्केट कैप बढ़ रहा है, मतलब आप उस कंपनी का वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। मार्केट कैप घट रहा है, मतलब वेल्थ रिडक्शन हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो हर एक कंपनी को कोशिश करना चाहिए जैसे कि उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़े। लिस्टेड पब्लिक कंपनी को क्या कोशिश करना चाहिए? उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़े, लोग उस कंपनी का शेयर को खरीदे और उसका शेयर प्राइस कॉन्टिन्यूअस बेसिस पर ऊपर जाए, ताकि लोगों का पैसा बने, ताकि कंपनी का वैल्यू बढ़े, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। मैं दो तरह का कॉन्सेप्ट पढ़ाया ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। एक को बोलते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और एक को बोलते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अभी हम एक कंपैरिजन करेंगे, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ये क्वेश्चन आता है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या अंतर है? पहला अंतर, प्रॉफिट इज नॉट क्लियरली डिफाइंड।
प्रॉफिट क्लियरली डिफाइंड नहीं है, नॉट क्लियरली डिफाइंड। प्रॉफिट क्या है पता नहीं, लेकिन वेल्थ क्या है पता है। वेल्थ इज क्लियरली डिफाइंड। क्यों? प्रॉफिट का बहुत मेजर्स है, देर आर मेनी मेजर्स ऑफ प्रॉफिट, मेनी मेजर्स ऑफ प्रॉफिट। क्या क्या मेजर्स है मैं बताया था? ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ईबीआईटी, ईबीटा, ईपीएस, ये सब हम बात कर रहे थे। These are certain measures of profit. There are many measures of profit. जब भी आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना चाहते हैं, किसको मैक्सिमाइज करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट को, पीबीटी को, पैट को, ईबीआईटी को, ईबीटा को, ईपीएस को, किसको मैक्सिमाइज करेंगे? वो कंफ्यूजन है। लेकिन वेल्थ में सिंगल मेजर ऑफ वेल्थ, जैसे ठंडा मतलब कोका कोला, वेल्थ मतलब एनपीवी। व्हाट इज एनपीवी? दैट इज इक्वल टू पीवी ऑफ इनफ्लोज माइनस पीवी ऑफ आउटफ्लोज। वेल्थ इज क्लियरली डिफाइंड, देयर इज नो कंफ्यूजन। वेल्थ का मतलब एनपीवी, प्रॉफिट का मतलब मेनी प्रॉफिट, जीपी, एनपी, पीबीटी, पैट, ईबीआईटी, ईबीटी, ईबीटा, ईपीएस, आपको पता नहीं क्या है। थर्ड थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, प्रॉफिट इज एन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। प्रॉफिट कौन सा कॉन्सेप्ट है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटेंट प्रॉफिट निकालता है, लेकिन वेल्थ या वैल्यू मार्केट निकालता है। वेल्थ इज ए मार्केट कॉन्सेप्ट। अभी समझाया था, वेल्थ इज रिफ्लेक्टेड इन द मार्केट प्राइस। जब भी अकाउंटेंट प्रॉफिट निकालता है, अकाउंटेंट इनकम को बढ़ा देगा, एक्सपेंसेस को कम करके दिखाएगा, तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो प्रॉफिट कैन बी इजीली मैनिपुलेटेड। क्योंकि प्रॉफिट वन मैन शो होता है, अकाउंटेंट निकाल दिया, उसी आदमी अगर मैनिपुलेट कर लिया तो प्रॉफिट दिखाएगा। जैसे वो एक बहुत सारा कंपनी अपने बुक्स में प्रॉफिट दिखाते हैं। अभी लेंस कार्ट इतने दिन से लॉस में चल रहा था, अभी इस साल प्रॉफिट दिखा दिया। कहां से कुछ करके इधर उधर करके प्रॉफिट ये हुआ। लेकिन प्रॉफिट दिखाना अलग है, लोग मानेंगे प्रॉफिट हुआ है, वो अलग है। मानना मार्केट में है, मार्केट बहुत सारा लोगों को है। यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम, यू कैन फूल सम पीपल फॉर सम टाइम्स। तो मार्केट को मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल है। तो वेल्थ कैन नॉट बी इजीली मैनिपुलेटेड। फिफ्थ, प्रॉफिट इज नॉट बेस्ड अपॉन प्रेजेंट वैल्यू। प्रॉफिट प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर बेस नहीं है। प्रॉफिट इज नॉट बेस्ड अपॉन व्हिच वैल्यू? प्रेजेंट वैल्यू। क्यों? मैं बताया था, प्रॉफिट इज इक्वल टू इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। प्रॉफिट इज इक्वल टू इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, इनफ्लोज माइनस आउट। लेकिन वेल्थ इज बेस्ड अपॉन प्रेजेंट वैल्यू। वेल्थ इज बेस्ड अपॉन व्हिच वैल्यू? प्रेजेंट वैल्यू। बेटा वेल्थ का मतलब क्या है मैं समझाया था, वेल्थ इज इक्वल टू इनफ्लो माइनस आउटफ्लो नहीं है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज। प्रॉफिट सोचता है आज का 1 रुपया, 1 साल बाद का 1 रुपया, 2 साल बाद का 1 रुपया, सब सेम है। तो प्रॉफिट किसको कंसीडर नहीं करता है? प्रॉफिट डज नॉट कंसीडर
टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसको हम बोलते हैं टीवीए। यहां पर लिखेंगे वेल्थ considers time value of money या टीवी। तो आप अगर प्रॉफिट मैक्सिमेशन और वेल्थ मैक्सिमेशन को कंपेयर करें, कैन यू टेल व्हिच वन इज ए बेटर ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट मैक्सिमेशन और वेल्थ मैक्सिमेशन? तो सबको पता है वेल्थ मैक्सिमेशन इज ए बेटर ऑब्जेक्टिव देन प्रॉफिट मैक्सिमेशन। तो व्हाट इज योर कंक्लूजन? वेल्थ मैक्सिमेशन is a better operative objective to pursue than profit maximization। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो एग्जाम क्वेश्चन आ सकता है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन, कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन profit maximization and wealth maximization objective of financial management, which is a better objective and why? Better objective to pursue and why? I hope you can write the answer of it। आपको प्रॉफिट मैक्सिमेशन क्या है लिखना है, वेल्थ मैक्सिमेशन क्या है लिखना है, प्रॉफिट मैक्सिमेशन और वेल्थ मैक्सिमेशन को कंपेयर करना है, और लास्ट में कंक्लूजन में लिखना है वेल्थ मैक्सिमेशन इज ए बेटर ऑब्जेक्टिव टू परस्यू देन प्रॉफिट मैक्सिमेशन। अभी मैं आपको अनम्यूट करता हूं, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। हाँ बोलिए। सर ये जो गोटे पढ़े एनपीबी प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी प्रोजेक्ट सी लिखते 5,000 10,000 80,000 ये जो 10,000 एक्सेप्ट केमती कले टे बुझे ना वो प्रोजेक्ट 10,000 लिखिए, କୋଉ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆଜି ଯୋଉ ପଢେଇଥିଲେ? हाँ आज ठीक जोटा पढ़े है सर, जो स्टार्टिंग में आप दिखाए थे कि प्रोजेक्ट है इसमें 10,000 आएगा 20,000 आएगा, तो वो किस बेसिस पे आया था? मतलब वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे या फिर वो हमको अर्न करके देगा वो प्रोजेक्ट? वो प्रोजेक्ट उतना पैसा अर्न करके देगा। थैंक यू तो सर। टाइम वैल्यू जो मनी का निकाल रहे थे वही वाला बोल रहे हैं शायद। हाँ, वो पैसा उतना, सपोज आप एक जेरोक्स मशीन बिठाना चाहते हैं, अभी आपका 80,000 लगेगा और जेरोक्स मशीन 5 साल जाएगा। हर साल वो फर्स्ट ईयर में 10,000 देगा, सेकेंड ईयर में 20,000 उस मशीन से आएगा, सब खर्चा जाने के बाद थर्ड ईयर में इतना पैसा आएगा, फोर्थ ईयर में इतना आएगा, फिफ्थ ईयर में इतना आएगा। तो अभी आप डिसाइड करना चाहते हैं वो मशीन बैठाएं या नहीं बैठाएं। तो क्या करेंगे, वो 5 साल का जो कैश इनफ्लो आने वाला है उन सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, सबको ऐड करेंगे, हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, उससे 80,000 माइनस करेंगे, जो होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। अगर वो पॉजिटिव में आता है तो उसको बिठाना चाहिए, अगर नेगेटिव में आता है तो उसको बिठाना नहीं चाहिए। सर फॉर इंफॉर्मेशन, जैसे कि जब लोग प्लांट में कोई प्रोजेक्ट सजेस्ट करते हैं कि दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट विल गोइंग टू सेव सम एनर्जी सेविंग एंड दिस ऑल काइंड ऑफ थिंग्स एंड विल गिव अ रिटर्न फॉर इन फ्यूचर, तो वहाँ पे फाइनेंस में जब हमारा प्रोजेक्ट को एक प्रेजेंटेशन दिया जाता है तो
उनका एक कैलकुलेशन शीट है जिसमें वो आईआरआर निकालते हैं। वो हम बात करेंगे, वो बात करेंगे आगे जाकर IRR क्या है। जी जी। तो आई थिंक सर ये जो सर कंक्लूजन में है वो लास्ट लाइन क्या, कौन लिखे सर? ऑब्जेक्ट टू परस्यू, परसू सर। परस्यू परस्यू मतलब फॉलो। ओके। सर ये जो दो मॉडल हैं, सर ये क्या अजम्पशन के बेसिस पे हैं? जैसे आप एग्जांपल दे रहे थे कि पहला साल लेट्स से 10,000 विल कम, देन 20,000 विल कम, तो ये जो आपको हिसाब करना पड़ेगा ना। आप एक जेरोक्स का मशीन बिठाए हैं, पहले साल क्या बहुत सेल होगा, पहले साल कम आएगा, फिर नेक्स्ट ईयर में थोड़ा मार्केट में आपका जब पता चल जाएगा दुकान है तो थोड़ा ज्यादा आएगा, फिर और थोड़ा ज्यादा आएगा। ये सब आप एस्टिमेट करते हैं, लेकिन तो एक ये बार सर कोई इसके लिए कोई दूसरा टूल है? मतलब ये जो जो प्रोजेक्ट बनाते हैं तो तो वो ये एस्टिमेशन होता है। तो एस्टिमेशन कैसे किया जाता है? एक्सपेक्टेड सेल्स माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट, तो जाकर आता है एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। तो उसका जो सर टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी ये होते थे। पर हम लोग कैलकुलेशन निकालते हैं ना सर, और भी फैक्टर्स रह सकता है उसमें, लाइक अगर मान लीजिए कुछ बहुत सारा फैक्टर रह सकता है, मैं तो एक सिंपल फैक्टर बताया। Sir, kindly tell total value of the company again. Total value of the company is represented through its market capitalization. What is market capitalization? मार्केट कैपिटलाइजेशन गोटे कंपनी रो मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकालते हैं? उस कंपनी का कितना शेयर है और एक शेयर का दाम अभी कितना है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल जाएगा। सर ये लिस्टेड कंपनी की बात हो गई, बट अनलिस्टेड में हम अगर मार्केट कैप लिस्टेड कंपनी में मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं, मार्केट तो नहीं है, मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे आएगा? ठीक है, Sir, the number of shares into now one share टू मार्केट into प्राइस। one. तो अनलिस्टेड कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालना डिफिकल्ट है, क्योंकि उसका मार्केट प्राइस पर शेयर पता नहीं है। उस केस में हम क्या कर सकते हैं, देखेंगे उस जैसा कंपनी जो लिस्टेड है उसका प्राइस कितना चल रहा है, उसे देखकर हम एक अजम्पशन लेकर निकाल सकते हैं, लेकिन दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज मार्केट कैपिटलाइजेशन। हम उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। सर वो एंटरप्रेन्योर वाला है जो नया नया बिजनेस करते हैं ना। ठीक, और कोई है, और कुछ पूछना है? तो जीएमपी जो रहता है वो क्या सर अलग? सर can we call the unlisted companies यार चिट फंड कंपनी? नहीं, ऐसा नहीं। अनलिस्टेड कंपनी का चिट फंड के साथ कुछ संबंध नहीं है। कंपनी दो तरह का है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी जो कंपनी लोगों से पैसा मांगता नहीं, वो अपना पैसा अपना अरेंजमेंट करता है। पब्लिक कंपनी जो लोगों से पैसा मांगकर कंपनी बनाया है। और पब्लिक कंपनी दो तरह का होते हैं, एक होता है लिस्टेड, एक होता है अनलिस्टेड। लिस्टिंग करने के लिए कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है, वो क्राइटेरिया तुम अगर फुलफिल करोगे तुम अपना कंपनी को लिस्टिंग कर सकते हो। सब कंपनी उतना स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं, इसलिए वो अनलिस्टेड रहते हैं। ठीक है, Yes, sir. Thank you. सर जो लार्ज कैप कंपनी 1 to 100 ଦେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ନିଫ୍ଟି ତାହେଲେ କଣ ସେଠି? निफ्टी माने निफ्टी मीन्स गोटे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज रे किना बिका होउथबा जेते कंपनी अछंती तादरु 50 टा बेस्ट कंपनी बाची कि तारो गोटे इंडेक्स ताको आजे निफ्टी। 50 टा बेस्ट विभिन्न सेक्टर ସେଗୁଡା କଣ ଲାର୍ଜ କ୍ୟାପ ରେ कंपनी ଯିବ? सबुडा को लार्ज कैप कंपनी थिबो ता भीतर, किंतु 1 रु 50 नुहे, विभिन्न सेक्टर रु निया जिवो। ओके सर। बैंकिंग रो बेस्ट दी तीनटा जीवो, ताकर गोटे ओके मेथड अछि को सेक्टर जीवो, को कंपनी ता भीतर रही परिवो, कोटा नाही, ताले 50 टा बेस्ट कंपनी विभिन्न सेक्टर रो मिसै कि निफ्टी। सेंसेक्स रे 30 टा कंपनी, बुझिया सेंसेक्स टा कौन मिड कैप रे थियो? नहीं, सब लार्ज कैप रो। एनएससी रे जो कंपनी गुडा का सेल होउचंती तार गोटे इंडेक्स हैला निफ्टी। बीएससी रे जो कंपनी गुडा परचेज सेल होउचंती तार गोटे इंडेक्स हैला सेंसेक्स। सेंसेक्स टॉप 30 कंपनीज को नेकिर करा जाए ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स। निफ्टी टॉप 50 कंपनी को नेकिर करा जाए ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सर गवर्नमेंट कंपनी सब लिस्टेड में आता है या अनलिस्टेड में?
गवर्नमेंट कंपनी का मतलब ही अलग है। जिस कंपनी में गवर्नमेंट का 51% शेयर है वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है। वो लिस्टेड भी हो सकता है, अनलिस्टेड भी हो सकता है। किसी कंपनी का 51% शेयर्स अगर गवर्नमेंट खरीद लिया उस कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। प्राइवेट सर कंपनी भी हो सकता है, पब्लिक भी सर हो। सपोज एनटीपीसी हैला कि नाल्को हैला तो सेमानंकु सर सब कंपनी नुहति जोड़ा कॉर्पोरेशन जो कंपनी गुड़ा को गोटे पार्लियामेंट रे एक्ट पास करिकरी हेता है ता कहा जाए कॉर्पोरेशन हला से गुड़ा मध्ये गवर्नमेंट कंपनी। सर लेंस कार्ड जो कंपनी अछि सेटा अबे पब्लिक सेक्टर को पड़ी अछि ताले पब्लिक कंपनी हला प्राइवेट कंपनी थिला और पब्लिक सर कंपनी। लेंस कार्ड रे जो माने जॉब करचंदी से माने गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉई सर गवर्नमेंट कथा कोठी उठिला पब्लिक रो पैसा उठेला माने पब्लिक कंपनी। पब्लिक माने मु तू ताठू याठू ताठू भिक्क मागिला माने पब्लिक कंपनी। भिक्क न मागिची माने से प्राइवेट कंपनी। गवर्नमेंट कथा उठी नाही एठी पब्लिक या गवर्नमेंट अलगा। ओके सर। सर वेल्थ इज ए हेलो सर मार्केट कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब क्या है? कौन हला का विषय को चलचंदी सर वेल्थ इज ए मार्केट कॉम्प्लेक्स मतलब क्या है? मार्केट कॉन्सेप्ट सर कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट अलगा कॉम्प्लेक्स अलगा। कॉन्सेप्ट माने मार्केट बेस्ड कॉन्सेप्ट। वेल्थ टा रिफ्लेक्ट हुए मार्केट प्राइस के तेनु एबे तब कह जाए कोन वेल्थ इज ए मार्केट बेस्ड कॉन्सेप्ट। प्रॉफिट इज एन अकाउंटिंग बेस्ड कॉन्सेप्ट। ठीक सारा सर श्रेणी सर आई हैव अ डाउट सर। ये बीएससी और एमएससी में डिफरेंस क्या हुआ? अरे एटा 1 नंबर मार्केट सेटा 5 नंबर मार्केट डिफरेंस कोन एटा उटा मार्केट सेटा उटा मार्केट। सर सर आई हैव अ क्वेश्चन सर। हां सर जेमते सर आपण कहले कि पब्लिक कंपनी जते बेले से आईपीओ लॉन्च करे पब्लिक कंपनी और जते बेले से बखरे किसी शेयर को अलर्ट न करथाय जो माने इन्वेस्टर थांती से माने को देथांती से माने हेले प्राइवेट कंपनी। हां जितने दिन जाए तो से लोगों को यस यस हां सो केते बेले सर गोटे कंपनी आईपीओ रिलीज करे से कोन पय करे जेमति सर रिलायंस रो तो मल्टीपल कंपनी अछंती रिलायंस रो निजर भी आईपीओ अछि रिलायंस ऑलरेडी भी मार्केट रे लिस्टेड अछि कंपनी ता लोगों को हाथ रे टेकी दबा बुझिला। यस यस माय क्वेश्चन इज कि जेमति रिलायंस रो माने रिलायंस गोटे व्यवसाय करूची व्यवसायटा भलो चलला मोर पैसा दरकार पड़िबो मु कोन करिवि व्यवसायटा बिकि देबि आ गोटे व्यवसाय करिवि मोर पैसा ओके दरकार ओके पड़ले तो करिवि ना जेतेबेले जाय पैसा दरकार पड़ी नाही मोर अलगा किछि नाही मु मो कंपनी मु चलेइबि अनलिस्टेड करिगिरी अनलिस्टेड ओके तो प्राइवेट गइगिरी जेतेबेले मु यस चाहेबि यस मोर पैसा आवश्यकता अछि कंपनी आउरी पैसा दरकार आउ लोकन को मु आनिबि पब्लिक करिवि हला। ओके तो से टाइम रे अच्छा तो रिलायंस सेति बैंक रिलायंस जियो एपर्यंत तर रिलायंस जियो पब्लिक विश्वास लानी पब्लिक हां हे आई नहीं हां ठीक ओके अछि आउ का कोन कहबार अछि सार असलेनी गुरु सार असलेनी हाँ हाँ आसलिनी आज्ञा अच्छा सर नमस्कार सर नमस्कार नमस्कार रहिली सर। ठीक है सर, थैंक यू। Okay, thank you, sir. It's a mind-blowing class, really. थैंक यू Thank you, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग Good सर। evening. Good evening. गुड इवनिंग सर Namaskar. गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर Good evening. Good evening. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग Good सर। evening. सर नमस्कार। हाँ नमस्कार विश्वरंजन सर बाहर हंतु तापर करवा हम गुड इवनिंग सर। आज होपफुली एवरीवन विल Good evening, sir. मेंटेन सम डिसिप्लिन आउ से मार्केट रे थाई के फोन रे कथा हेबेन योर सर से ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଖୋଲିବେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ 5-10 ମିନିଟ नहीं नहीं से म्यूट हो नहीं मु भी एबे देखली मु आज अन्य जगह रे भी कोशिश कली कि ସେଇଟା एबे better देखला को मो पाखरे से ऑप्शन नहीं बिकॉज़ आई एम नॉट ए होस्ट से समवन एल्स जदी के सेवाने करि परिबे ନହେଲେ କିଏ ଗାରେଇ ଦଉଛି କିଏ सर କଥା रश्मि ହଉନି मैडम होची सर। सर हाँ नमस्ते रश्मि मैडम हाँ सर हाँ मते मैडम अभी आपण होस्ट अछन मते होस्ट करंतु मु म्यूट कर देबी सर। मु एबे होस्ट अछि
हाँ हाँ आपन को होस्ट कर देई छी आपन खाली मो ना डीडीसी मैनेजमेंट ऊपर क्लिक करके कर नहीं नहीं दियंतु शुणु होस्ट एबे एबे जेहेतु मु होस्ट अछि म्यूट ऑल आसीगला नहले आसु हाँ नथला हाँ सर आसीबो आपन को म्यूट हाँ एबे ऑल आसीगलानी मु कर देबी डोंट वरी आगे आगे थैंक यू थैंक यू ओके हमें लास्ट वाज आवर क्लास कौन थिला हम क्लास रे वी वर टॉकिंग ऑफ डोंट म्यूट ऑल कले हवन देयर हैज टू बी आस्क्ड टू अनम्यूट कले जाई के हबो लेट मी ट्राई टू you can unmute whenever I think you can, if you want to say something, you can unmute. Just try. Yes, sir. It's happening. So that way, let us maintain some discipline and work. Start the class. Last Yes, class sir. we have read about ଏ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ସେ ଗାର କାଟିବା because people don't want to be disciplined. Last class was हमें पढ़ुथिले जो how globalization affects ethics. So now we will read environmental perspective of business ethics. How many of you feel that businesses or industries, whichever industry, they contribute to pollution or imbalance in our environment? 100%, sir. Yes sir 100%. So this is also a fact, but we need industry for economic growth. We need industry for employment generation. We need industry for sustenance and survival. But any industry in some way will contribute towards some type of pollution or environmental impact. A best managed or a very well managed company will minimize the impact. But nobody can say that and my company doesn't impact the environment. And whatever change we are seeing in the environmental or in our seasonal variation or the lack of winter, cold days during winter, lot of rain during post monsoon season, all that is because of these industrial or developmental activities. You all know greenhouse gases, the carbon emission, all those issues are there. And we are all trying, and the world is desperately trying to control them. So business and ethical business will always be sincere or truthful about what it is going to emit and its attempts or steps to minimize that by control that. So business ethics ro demand hochi dekhontu business kala mane pollution hobo, but pollution taku proper jaha haba jouta hochi boli taku declare kariya darkar. Quantification has to be truthful, and the steps suggested by the Pollution Control Board or the Environmental Ministry have to be taken seriously and implemented properly. One research has shown that just 100 companies all over the world, they contribute towards 71% of greenhouse gas emissions since 1988. Similarly, 78% of small businesses had no environmental management system. And these small businesses, they say that they are not equipped or financially it is not possible for them to go for environmental activities. So that is how this problem comes, and that is how people neglect environment. Traditional ethics in West focus on the rights of the individuals, but fail to develop elaborate theory of animal rights until the last century. Yesterday, last class, I have told you about PETA. There is a movement which tries to minimize
the use of animals, live animals, or the experimentation with animals for developing cosmetics or other chemicals. I don't know anyone, any one of you have heard about Vimta Labs? Vimta Labs विषय के सुनिचंदी? No, sir. घर पाखरे जदि कोठी जो पैथो लैब्स जदि किए अछंती, some of the patho labs have are registered with Vimta Labs. So sei jaga re Vimta Lab is one of the Dr. Lal laboratory jemti, something like that. How once I visited Vimta Lab long back. So now Vimta Labs has different divisions. One of their division was for testing new developed medicines, like the like what we had for COVID. We had a vaccine tested and developed. So under US FDA, this Vimta Lab is registered in Hyderabad. They have a facility where the drugs is tested on human beings. People come voluntarily, they are paid money for that, and the new drug is tested on them, and their whole body parameters and parameters are monitored, and after the experiment period they are left and they go to their house, they earn some money, and people are poor, so they volunteer for such things. But when you, and there is, I think, one film has come also for that, where people volunteered because of money and they had to face the consequences because those are new medicines. Now, this is one aspect of, you can say, pharmaceutical industry. But here also there is a business ethics involved. You cannot launch a drug without human testing, because otherwise the whole humanity will be at stake. But when you are testing on some human beings, and they are agreeing to get tested, or they are agreeing to use that medicine because they are in dire need of money, whether this is ethical or unethical. So such questions do come, and it is happening every day. And there are instances when people like, when there are people are in their terminal stage of a disease. So at that time, they also voluntarily agree for testing of use of some drugs, which they feel that if they are lucky, they will get cured. So such issues do come. Then there is also in our the progress, like in our economic progress, or in our pursuit for economic growth, like cutting trees. This is also one aspect which we really have to very seriously think about. Bhubaneswar, I don't know, in 90s, Bhubaneswar was a place where you will not feel much humidity or temperature. It all started around 2004 or 5. I remember we never used AC, even in summer when there was power cut also. During power cuts in the nights in Bhubaneswar, if you open the windows, you will have tremendous amount of fresh air and you will not feel the heat. But after that, things started changing because Bhubaneswar lost its green cover mainly due to the cyclone and super cyclone in 99, and then because of unhindered development everywhere. There were a lot of water bodies all around Bhubaneswar. All of that has vanished. People have used ponds earlier, which were ponds, they have been used or filled up for construction of houses. So these are the issues where the business ethics environment is getting impacted by the business, and an ethical businessman should always try to minimize that impact. See, even when I talk of construction, Bhubaneswar earlier had one-way roads in many places. Now we are having single road. Then there were widened road for 2 vehicles to cross and go. Then there is now single one-way traffic. Then there are talk of 6-lane vehicle. So all this is needed for our development, no doubt, because otherwise we will not be progressing. Because material progress is one of the indices of progress. But all that impacts the environment in a very irreversible way. And that is where
business ethics comes into play. While pursuing the idea of maximizing profit, many organizations try to relocate their businesses. This is another area. You know, are you aware that Orissa is one of the state with maximum number of aluminum factory? Yes, sir. No other state in this country produces this amount of alumina or aluminum in India. No other country, no other state. And that is because we have quite a good reserve of bauxite. We have coal to produce electricity. We have bauxite to produce alumina. Now, that we use that for the growth of the state. But it has its own problems. Because you generate red mud, you generate fly ash. France, which was one during 90s or 80s, one of the leading producer of alumina and aluminium, and one was the pioneer in developing the technology for production of alumina and aluminium, has stopped production of alumina and aluminiums, basically alumina and aluminium to some extent long back. I visited that place in 95. By that time, they have stopped producing bauxite, alumina from bauxite, because they found that red mud is a very big environmental aspect to handle. Then now Europe is trying to phase out the aluminium smelters, which uses power to produce aluminium from alumina. Now what they are doing, because aluminium is such a metal where 95% of the aluminium produced since inception or the first day of production of aluminium, the total amount is available till now, and it is recyclable. So that's a very big advantage of aluminium. So what now Europe is emphasizing that they will buy aluminium which are recycled. They will pay higher price for buying aluminium which are recycled. What they are doing is they are converting their primary aluminium smelters into recyclers. And that is how they are trying to control the emission of greenhouse gases and minimize the impact of carbon emission. So countries are changing this way. So what has happened is, there are countries in Africa where bauxite is abundantly available. There is one country, I don't know if one of you have heard, Guinea Conakry. Guinea, it is one of the Guinea, because there are many Guineas, and one of the Guineas, Guinea Conakry, that country is called. And that has the best quality of bauxite in the world. And American and Canadian company have been exploring bauxite since 1960s. And that country is still underdeveloped, because what these people have done, they have mined the bauxite and taken it back. And there are other places in Africa where they produce a lot of alumina, they produce a lot of aluminium, but everything is dumped there. So what is happening is, the developed countries, they are trying to, or the businessmen in developed countries, they are trying to relocate their business to underdeveloped or developing countries where the environmental regulations are still not very strict, because these people want investment and employment, and they take advantage of this. Developed companies from developed countries, they take advantage of these lax environmental regulations and try to benefit from it. This is also one of the unethical practices. So when you are running a business which generates things which are environmentally hazardous, it is unethical to allow these things to go untreated, like liquid waste. Solid waste handling in most of the cities are examples where environmental ethics is not adhered to. This is one of the examples. In Bhubaneswar, in everywhere. In many of the cities, if you go, like near Sainik School, there is a dump yard. Our whole area of Salesri Vihar and this North Bhubaneswar is in rainy season, if there is a wind blowing from south to north, all houses in these areas will get the stinking smell. And in Delhi, you could see the mounds of waste
in Mumbai, you can see that. Another is the sewage treatment, which is again an area. All the rivers in India are now polluted. Jamuna is polluted. During Kumbh, it was told that Ganga was totally polluted with sewage. Because none of the cities have proper sewage treatment plant, and they do not bother to even leave that sewage to even a river like Ganga, which we spiritually we seek that it's a very auspicious river. So that is where again business ethics comes. So this business ethic doesn't mean that the municipality also is doing business, because they are taking money, they are generating something, and so they should handle this waste, the sewage and everything properly. And even any company like in Kanpur, which has a lot of leather businesses, all the effluents are let into Ganga. Sustainability and ethics. What is sustainability? Can anyone define? एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए विकास करना। क्या? वातावरण को, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए विकास करने का कुछ। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए विकास करना सस्टेनेबिलिटी है, ऐसा आप सोचते हैं? और सबका विकास होगा, जिसमें हर एक का। सबका साथ सबका विकास। जी सर। Sustainability means continuity of some activities of the project for longer period of time. सर किछि भी रिसोर्स को बहुत दिन जाए आमे ताको सस्टेन करी रखि परिबा, एमति कि सेटा केबे केमति सेटा सस्टेन करियो, सेटा कोन सस्टेन Resource should be used in such a way that the concern of future use. I think many of you must have heard that the company could not sustain the loss. Have you heard such statements? Yes sir, yes sir. A person could not sustain the pain. Have you heard such things? Yes sir. What does it mean then? Sir, Endurance. endurance, tolerance. Yeah. Sustaining is, it is not only tolerating, it's a question of existence. Surviving, sir. Survival. A company could not sustain the loss means it collapsed. A person could not sustain the pain, so then he did something else. So what sustainability means? That, see, I don't know, carrying capacity, any one of you have heard? There is a word called carrying capacity. Have you seen? Yes. Have you seen some overloaded trucks with Yes, sand or whatever, Yes, and sir. then emitting black smoke? Yes, sir. Yes, sir. So there, the truck is beyond its sustainable capacity. Means when you are doing something which is, where after that the system is in such a position that it may not be able to survive. Beyond threshold, sir. Beyond the threshold. So that is one is sustainability. Sustainability is one point. Somebody said that prolonging the use or prolonging the life, that is sustainability. We are using coal. We know that coal is going to end. So after that, what? That is one. Similarly, when you use coal for power generation, you also generate carbon monoxide or SOx and NOx. So that impacts the environment. So you need power, but you are creating pollution. That pollution has some other impact. So the action of generating power using coal, whether it is sustainable. Sustainable means whether after some times, the same action, if continued the way it is being done today, whether we will have something left with us or not. Means whether the environment will be left with us or not, or it will be damaged. Supriya ma'am, what are you doing? Class or किसी मतलब नहीं. They are all playing here. So
Sustainability is that you, whatever action the business is taking, the business will survive. That is one, for long term. Second, the environment or the ecosystem in which the business is operating will also survive for that extent, to that extent, or up till that time. Any one of you is from or know about Brajraj Nagar? Yes, sir. Those for cement. Jharsuguda nearby. For cement, sir. No cement. That is Rajgam. For coal. Brajraj Nagar was near Jharsuguda. Mines, coal mines. Brajraj Nagar was famous for Orient Paper Mill. That was one of the oldest paper mill of Orissa. And that town was sustained by the paper mill. The whole town was because developed or was there because of the paper mill. Okay. If you go to Brajraj Nagar today, that paper mill is totally gone. The quarters are Bhoot Bangla, and many people are the old quarters. People are using it just like that because the company has left. No sign of that company. Now that city was dying because there was no way economic activity and there were people were leaving. So what government did, because coal is available nearby, luckily the government intervened and they established the office of Mahanadi Coalfields, because by that time the Coal India, one part of Coal India, Orissa part of Coal India was taken out and formed as Mahanadi Coalfields. Independent Coalfield company was formed. So then Mahanadi Coalfield had established its offices in Brajraj Nagar. And then again the economic activity revived. But if you go to Brajraj Nagar today, the main area of the earlier Orient Paper Mill area, the bungalows, is totally like, is a Biran area, and it's all Khandahar. And still the Khandahar of the plant is still existing, and it is like that. What I am saying is, the paper mill concept was sustainable for a period, but beyond that, producing paper in Brajraj Nagar was unsustainable. That is why the company closed that project. So means what? The cost of production and everything was beyond the market regulated price. So that is how sustainability is also a part of business ethics. Means you should not do something for short run. Sustainability in ethics means, if you are planning, you should, whatever business you are planning, it should be a sustainable business. So how does ethics relate to sustainability? When we plan to make, like in agricultural commodity, sustainable, ethics plays a role by bringing in the way the farmer is treated. You have to pay the farmer a proper price. Then only he will be able to do agriculture. Similarly, if you keep on irrigating, use river water for irrigation, after a period of time, the soil will lose its productivity and there will be acidity and alkalinity developing in that. So for that, you have to use a sustainable method of agriculture. And so sustainability is mainly prolonging the life or trying to protect the resources for the next generation or for people who will come and enjoy. Because otherwise, whatever we will enjoy, okay, but for future generation, nothing will be left. There is a company called Alcoa. This is aluminum company of America. Piri Minis is one of the sustainability head of that company. What he said about sustainability and business ethics. You cannot be considered an ethical company if you do not follow sustainability principles. Nor can you apply sustainability concept if you do not have a strong foundation of ethical principles. The two are intrinsically intertwined. Means if a ethical business house or business company can, there is a possibility that they will be able to maintain sustainability. And vice versa also, a sustainable company can be ethical. If you are unethical, no way you can make it sustainability. And if you are unsustainable,
you cannot be ethical also, because survival will be the issue. Then Albert Einstein also said that the most important human endeavor is the striving for morality in our actions. Our inner balance and even our very existence depend on it. Only morality in our actions can give beauty and dignity to life. In this connection, I will let you know, you can remember also in Uttarakhand, many of the cities are sinking. The roads are, because of the load on the hills, the construction which we are doing, the development we are carrying. So our developmental activities have become unsustainable. So that is another area of sustainability. Peter Espute, a sociologist and environmentalist in Jamaica, writes, mankind must respect the integrity of the living system, which is the planet Earth. In a real sense, the Earth has rights. The rights of humans should not supersede Earth's rights, but rather be aligned and in balance with them to ensure the survival, diversity, sustainability, and harmony of the planet. The pursuit of profit and the right of man to procreate does not supersede the right of Earth to remain in biodiversity and free of danger from pollution. So this only means that our action, business action or commercial action, should be controlled in such a way that the Earth survives. We will now read about ethical theories. And I think with that, we'll conclude the module 1. We all know what is ethics. At least I have given you some impression about what is ethics. Then why these theories are there? You know how ethics is judged, or how a action is termed as unethical or ethical? Can anybody answer? When you consider one action as unethical or ethical? Sir, for ethical, we have to consider the social and economical, which are empowering our society. I have And given an example. So when it is mental morality, that's called. I have given you an example that the ethical, whether the action is ethical or unethical can be judged by the outcome of that action. I have told like A and B. If A is doing something on B and B is happy, or A is happy and B is unhappy, and if B does the same thing and A becomes happy, then A's action can be termed as ethical. But if A also suffers, then the action is unethical. So ethics basically is decided by the reaction or the fruit of that action. If you are doing a business, and suppose you take certain steps by which the business even collapse, then that decision is not proper, because making a loss will create many more issues in a business. Like Viswaranjan sir was telling you about IPO and all that. You are taking public money, and if you are not doing it properly, using it properly, then all that money will go to waste. People will lose their money, because a equity shareholder does not have any way of recovering unless you run that company properly. So to understand or to define or to make you or to help you in taking ethical decisions, some thinkers have proposed some theories. If you follow those theories, you can decide on a particular situation how to act or not act. Okay. So there are 3 main theories and there are 2-3 another theories. So we'll go one by one. I will try to show you one video in each theory and one slide on how the theory goes about. And in order to further understand ethical theory, there must be some understanding of a common set of goals that decision makers seek to achieve in order to be successful.
These goals includes beneficence, least harm, respect for autonomy and justice. I think you have to all very seriously or try to understand the meaning of these. Beneficence means it is beneficial for both parties. Least harm means if there is any possibility of harm, it should be minimized. As I said, every industry will have an environmental impact, but that impact should be minimized. And respect for autonomy, the parties should respect each other's independence and justice. What is justice? Legality and justice. Illegal and justice, injustice. What is justice? Any idea? Not harm to anybody. A decision of Justice to everybody. Justice is to not doing harm, a way to prevent not doing harm to others. Means a mechanism or system. Even suppose a Supreme Court or any court judgment is a legal statement, which is legally correct, but that may also do injustice. Justice is beyond law. It should be less harmful, or it should not do harm to anyone. Like when we say that we cut trees to make wider roads, or cut trees to create mines, or cut trees to have housings. So then we are doing justice to the human being, but we are doing injustice to the environment, Mother Earth. So there we have to see the real justice has to be done. Now, three ethical theories are there: meta-ethics, normative ethics, and applied ethics. Basically, we'll read about normative ethics and have some applied ethics. Now, meta-ethics addresses the origin and definition of people's ethical principles, universal truths, God's will, and how religion play a role in ethical decision are all part of it. Where, like, when somebody says that something happens naturally, natural disasters, what you can tell about that? This is beyond anybody's control. So there, this meta-ethics will come. Then normative ethics defines the moral standard that regulates right and wrong choices. These theories is subdivided into three theories: virtue theory, duty theory, and consequentialist theories. Then applied ethics. This is how ethics are used in everyday life to make everyday decisions. It often covers issues that are considered to be controversial, such as stem cell research, abortion, animal rights, nuclear war, homosexuality, or capital punishment. I will utilitarian ethics. We talked about two, no? Virtue theory. So can you again explain what is normative ethics? I'm coming. See, defines the moral standards that regulate So right. can you explain? So can. Yeah. Tell me. So can you again explain the normative ethics? This defines the moral standards that regulate right and wrong choices. These theories are subdivided into three theories. Virtue theory, we'll get into these theories. Virtue, deontology, consequentialist. It involves things such as good habits, a person's ethical duties, and consequences of making an inappropriate ethical choice. Normative ethics is the way generally things happen. This is a normal behavior. And we take such decisions in our day-to-day life. And that is why these are most common things. And there are three theories which helps us to understand whether it is ethical or unethical, those actions. Once we see the examples or the videos which I am going to show you, then you will understand what are these normative ethics theory.
This is utilitarian ethics. Utilitarianism. Utilitarianism is an ethical theory that determines right from wrong by focusing on outcomes. It is a form of consequentialism. Utilitarianism holds that the most ethical choice is the one that will produce the greatest good for the greatest number. It is the only moral framework that can be used to justify military force or war. It is also the most common approach to moral reasoning used in business because of the way in which it accounts for costs and benefits. However, because we cannot predict the future, it's difficult to know with certainty whether the consequences of our actions will be good or bad. This is one of the limitations of utilitarianism. Utilitarianism also has trouble accounting for values such as justice and individual rights. For example, assume a hospital has 4 people whose lives depend upon receiving organ transplants: a heart, lungs, a kidney, and a liver. If a healthy person wanders into the hospital, his organs could be harvested to save 4 lives at the expense of 1 life. This would arguably produce the greatest good for the greatest number, but few would consider it an acceptable course of action, let alone the most ethical one. So, although utilitarianism is arguably the most reason-based approach to determining right and wrong, it has obvious limitations. So I think you could have got some idea about the utilitarianism theory or virtue theory or something like that. Here, basically, we are talking of this is not a virtue theory, this is a consequentialism. Means we decide whether an action is good or bad based on the result it achieves. Now, that achievement of result is the betterment for the larger goods. Means if more people are benefited by that action, then it can be considered as a ethical action. Now, setting up an industry in one way can be justified by that. Even war can be justified by that. But there is also the example in the hospital, which is a hypothetical case, but that gives the best explanation to understand utilitarianism. Now, is it clear? Yes, sir. And the English philosophers Jeremy Bentham and John Stuart Mill were the exponent of this theory in the late 18th and 19th century. Now, in India, Odisha jo 5 tokia khaiba tokia chaulo, these are all examples of utilitarianism, where the government feels that the benefits to the most neglected person of the society should be given at any cost. I'm not saying these are good or bad, but see, there was one consequence of that Tonkakia Chawla. People are not ready to work. Many farmers complain that they are not getting laborers for their land. So that is one area. But you can, at the same time, you cannot say that people should die of hunger. Next is like, this Biju Swasthya Kalyan or whatever, that health scheme. I was with one doctor who has retired. He said there was one point of time Biju Swasthya Kalyan Yojana was one of the biggest project and people were really benefiting. It doesn't mean that what was happening, the hospitals were forced to take certain cases, even though the amount was decided by the government. But many hospitals found it beneficial also. So there are these are the actions which really have to be weighed. But what happens is, when the businessman is running a business, he tries to maximize the profit, but that profit will go to the owner. So it is not a more benefit for larger numbers. So what utilitarian will suggest, that you benefit your worker, you benefit your customer, you also benefit your society around you, and you also get a good return. So then
that will justify the business. So this is the utilitarian. Next is deontological ethics. Deontology. Deontology is an ethical theory that uses rules to distinguish right from wrong. It is often associated with philosopher Immanuel Kant. Kant believed that ethical actions follow universal moral laws, such as don't lie, don't steal, don't cheat. Deontology is simple to apply. It just requires that people follow the rules and do their duty. This approach tends to fit well with our natural intuition about what is or isn't ethical. Unlike consequentialism, which judges actions by their results, deontology doesn't require weighing the costs and benefits of a situation. This avoids subjectivity and uncertainty because you only have to follow set rules. Despite its strengths, rigidly following deontology can produce results that many people find unacceptable. For example, suppose you're a software engineer and learn that a nuclear missile is about to launch that might start a war. You can hack the network and cancel the launch, but it's against your professional code of ethics to break into any software system without permission. And it's a form of lying and cheating. Deontology advises not to violate these rules. However, in letting the missile launch, thousands of people will die. So, following the rules makes deontology easy to apply. But it also means disregarding the possible consequences of our actions when determining what is right and what is wrong. The term deontology is derived from the Greek word deon, means duty, and logos is science. Means whatever is governed by duties or the rule is called deontology. Deontological ethics, at least some acts are morally obligatory regardless of their consequences for human welfare. Such ethics are known by expression as duty for duty's sake. Virtue is its own reward, lest justice be done through the though the heavens fall. Now, in an examination, suppose the teacher goes through the answer book and gives whatever marks he or she feels correct. At the end of it, if a student is failing by just 2 marks or 3 marks or 4 marks, then if you talk of utilitarianism, then one logic will be that no, 2-3 marks is not a question, you should pass that. But if you talk of deontology, then it is whatever is rule is rule. So that is how, I don't know if sorry. The university has a moderation committee where a particular set of students who fail by small margins are again put through a committee who examine their answer books and see if they can be given some grace or something to pass. So there is a conflict. If you follow a rule, then somebody may not be benefited, like in promotion and all. The recent example, how many of you have seen the Women's World Cup? None or some? Yes, sir. Yes, sir, I have seen. Pratika Rawal Yes, was sir. Pratika Rawal was injured before the semi-final, and she could not play. And in her place, Sefali Verma come. So as per the rule, the playing 15 people got the medals.
So that is as per rules. The rule says whosoever was playing on the final day, 15 people in list will get the medal. But then our ICC chairman, Mr. Jayasa, he intervened and there was a rule was changed or modified to also include Pratika Rawal, and she was given the medal. So one way, the rule, whatever rule is rule, and nobody should feel bad about it. But again, then there is a question of virtue, or there is a compassion and being good. So from there, that comes that, okay, Pratika Rawal should also get, because she was unfortunately injured. So there can be such conflicts, but the action will ultimately decide. The deontological ethics maintains that actions are not justified by their consequences. Rather, factors other than good outcomes determine the rightness of action. Unlike utilitarianism, where the end justifies the means, deontologists argued that it is the means that are important. How you do, so that is important. The first great philosopher to define deontological principles was Immanuel Kant, the 18th century German founder for critical philosophy. If you are now, means that are important means, when you are appearing in exam, if you are not resorting to immoral practices, and then if you are failing, that's ethically you are correct. But a person will be always tempted to follow something or get some clue, just because when he or she feels that he or she is unable to answer the question, he will always or she will always look around to get some help. But a ethical person will not do that. I'm not saying don't do or do, but I'm saying that is how the situation will determine, and you will be put into such situation. Now, when you are making a business decision, you are also calculating a financial IRR and all that. All of us, a persons who are doing or are from finance background or are chartered accountant, all you all, it is very well known that you can manipulate some figure and get a good, you can show a good financial outcome for that project. You don't know what will happen in the future, but based on that return, you can claim something. But that is not ethical. You should not fudge with figures. You should not manipulate things. Last is out of the three theories, one is virtue theory. Virtue ethics. Virtue ethics is a philosophy developed by Aristotle and other ancient Greeks. It is the quest to understand and live a life of moral character. This character-based approach to morality assumes that we acquire virtue through practice. By practicing being honest, brave, just, generous, and so on, a person develops an honorable and moral character. According to Aristotle, by honing virtuous habits, people will likely make the right choice when faced with ethical challenges. To illustrate the difference among three key moral philosophies, ethicists Mark White and Robert Arp refer to the film The Dark Knight, where Batman has the opportunity to kill the Joker. Utilitarians, White and Arp suggest, would endorse killing the Joker. By taking this one life, Batman could save multitudes. Deontologists, on the other hand, would reject killing the Joker simply because it's wrong to kill. But a virtue ethicist would highlight the character of the person who kills the Joker. Does Batman want to be the kind of person who takes his enemies' lives? No. In fact, he doesn't. So, virtue ethics helps us understand what it means to be a virtuous human being. And it gives us a guide for living life without giving us specific rules for resolving ethical dilemmas. Is it clear? What is virtue ethics? Yes, sir. Basically, this stress is on being good. You have to be, under every circumstances, you should maintain the virtue. You should be virtuous. You should not succumb to temptations or
other considerations. In today's business world, corruption is one of the biggest problem in India. And corruption has become such a thing in life that, you know, it's very difficult to not to get tempted about it. And so it's a virtuous person can only stop being attracted by that act of corruption. Because when somebody gets extra money, I think it is very difficult for anyone to refuse. So there the play of virtuous ethics comes. One of the things I can explain is, you know, I think this year during Diwali, the government said that no officer should accept any gift. Because during Diwali you get all sorts of gifts, and gifts are run into anything. Now, earlier also companies were this medical representatives, they give doctors this and that and everything. Similarly, contractors give to the engineers. The lawyers, they become immoral and collude with each other to get benefit in a case. They try to prolong the case. So all these are contrary to the virtue. And this is one of the biggest problem of present world, where virtues are dying and people are becoming more and more unethical. Because this theory, which was inspired by Aristotle, says that if you are a good person, your actions will be good. If you are a good person, you will do good acts. If you are a bad person, every likelihood that you will do something wrong. So personal righteousness is of importance in virtue theory. Then discourse theory. Discourse ethics has two principal aims: to find ethical truths through discussion and to set ethics of discourse. There are four governing principles of discourse. Discourse is, it's a type of discussion. You know, today is social media, that something going viral. It is something like that. But many fake news, they go viral. So that is against discourse ethics. You should not propagate a wrong thing. So in discourse, it should be sincerity, openness, respect, and fair self-examination. You should be sincere enough to accept if you are circulating something wrong. But here people deliberately circulate such things. So that is why whenever there is a riot or something, first thing this government does is to stop internet, because that is one way of promoting discourse, a wrong discourse even. With this in mind, Jürgen Habermas, one of the founding thinkers on discourse ethics, has said the better argument prevails. But nowadays that's become very difficult. I don't know if you are a Oriya, many of you who understand Oriya, Tini Tundare Chheli Kukuro. That is another disadvantage of discourse ethics. If three people come repeatedly say that this is not a dog, but this is not a goat, but it is a dog, then ultimately you are made to believe that it is not a goat, it's a dog. So that is how the discourse changes. And present social conditions are very much in that way. Discourse ethics, also known as argumentation ethics, was developed by Mr. Habermas and fellow German philosopher Karl Otto Appel. These philosophers based their works on Immanuel Kant's moral theory and its criticism. Why discourse ethics came? Because if by now you must have understood that it is very difficult to really pinpoint a action as unethical or ethical, only considering the consequences or the rules, because every action can have some bad or some good outcome. And a proper discussion will ultimately lead to the a proper decision. Means
when we talk of now, when we are entering this age of electric vehicles, hydrogen vehicles, and all, the discourse is how to control the bad effects of carbon emission or environmental pollution. So many things are being done to combat the pollution, and this is how the real or the best outcome will come. There was a time when ethanol was considered to be the best choice or replacement of fossil fuel, and that is why government openly allowed mixing of ethanol or biofuel into petrol and diesel. But now suddenly you find that there is a discourse which says that it is not the right choice. So activity at certain point of time may look to be ethical, but if the discourse continues for long, or people try to get into the details of evaluation, then our assumption or our assumption that the action is ethical may turn out to be wrong. So discourse ethics is prolonging or experimenting with the thing for a long time and then finding out whether it is really good or it is bad. And once you feel that it is wrong, then you can discontinue the work. Here the discussion should be open to any person who is able to speak, and where an expression's means is mutually understood by all participants. Furthermore, no argument should be omitted by anyone, and the ultimate aim of all participants is to discover the best argument. There are three ideas of discourse ethics: cognitism, activism, justice versus good, universalizations. Cognitivism is belief that logic can be applied to ethical issues. This means that the resolution of a moral issue does not have to be made in relation to religious teachings or gut feeling. Instead, a rational thought can, through logical processes, decide upon an unbiased and unreasoned truth. Then justice versus good. Justice is whatever is as per law. This is same for all. But justice is beyond law in a way. But the law delivers justice. On the other hand, good may not be correct legally, but is correct as per accepted norms. Universalization. Impartiality also plays a role in universalization. In this idea, all participants in an ethical dilemma have the moral or universal duty to maintain the guiding principles that set out for the discourse. So these are the three things which guides the discourse theory of ethics. Then last one is feminist ethics. There are many ladies and girls in this group, so they must be understanding what is feminism. And feminist ethics has come because in our civilization in the recent past, in most of the places, in most of the areas of our world, women have been exploited to a great extent. They have not been given the similar status as men, and in many places this is still continuing, and that is how the idea of feminism came and feminist ethics came. Its aim to understand, criticize, and correct how gender operates within our moral beliefs and practices and our methodological approaches to ethical theory. More specifically, feminist ethics aim to understand, criticize, and correct the binary view of gender, the privilege historically available for man, and or the ways that views about gender maintain oppressive social orders or practices that harm others, especially girls and women who historically have been subordinated. Since oppression often involves ignoring the perspective of the marginalized, different approaches to feminist ethics have a commitment to better understand the experiences of persons oppressed in a gendered way. Now, are you aware that the women's cricket team gets the same payment as the men's cricket team as regards the match fee and all?
No. The BCCI has announced that. Earlier it was not there. This is a recent development. But why I am saying is, I have read in some article after the World Cup win that many of the women cricketer also justified getting less payment because they felt that the men's cricket tournament and all is earning the money and they are getting benefited from their earning. So those who are earning should get more and those who are getting benefits should get less. Because the sponsorship, the media coverage, video, this footage and all TV telecasting was more for men's cricket than women's cricket. But seeing this World Cup and all, the presence of people in the stadium, it is now, we can at least say that women's cricket has also become very competitive and attractive, and they are demanding larger viewership. So commercially, now money is coming into that. Each of the cricketer has really got, they have all become now crore-patis. Crore is nothing nowadays, but most of them have got beyond crores. Not 1 crore, many crores. And this is a good thing. Why they are saying that this World Cup win will galvanize the Indian women's cricket arena, because many people will now be ready to come into cricket. Earlier it was a taboo or a stigma, like, a girl playing cricket. Even I was seeing one interview by Mithali Raj. There was a film on Mithali Raj. And so there are many, it is generally accepted that the girls will play up to a particular time and then they will marry and settle down and all that. But many of that is now going away. Similarly, in film industry, there is a limit up to which a lady can work, because then they see she has to raise a family. After that, again, she may come back. But there are certain differences. But if there is exploitation on these areas because of the differences in physicality, then it's unethical. But there are certain things, and because of also social restrictions. Now, we know that it is still not safe in many parts of India for women to go out in the night alone. I have heard some people say very, it's very touching that, a girl will have at least has to be accompanied by a boy who is 5-10 years younger to feel safe, which is totally not a very proper or logical thing. But that is how it happens. So feminist ethics says that nobody should be biased or discriminated because of gender. When you in government practices in many places now, when there is an advertisement, the girl or the boy or the lady or the man, they get the same salary for the same post. But in private sectors, still there are discrimination. But it is also true that in private sectors, many ladies are becoming even CEO, CFO, and president of that group, Indira Nui and many other. So there are many examples. Things are changing, but there was a time when women were exploited. So that is how this feminist ethics also came as a theory. And what is binary? Gender binary is the commonly held view that individual human beings belong to one particular gender category, either male or female. It is true. I'm not saying it is wrong. But if somebody is a female, she is not able to do certain things. It should not be just because she is a female, she is not capable. That should not be the conclusion. She has to be given chance, and then conclusion should be drawn. If she is unable to perform, which can be true for a male also in the same situation. So, and in this cricket team, Harmanpreet Kaur, the captain, started playing with boys only. Jemima Rodriguez started playing with boys team only, because there were not many girls available for to form a team. Even that Kranti Gaur, she is from a tribal family, and she started playing cricket with boys, and her first tournament was
when the team could not find 11 boys. So she was taken as the 11th person to play in that team. And that is how she was noticed and she got into the competitive cricket. So just because somebody is female or male, that should not give any preference or some restriction. It has to be on a proper basis. Most people do not think of gender binary as an ideology, as it is so ingrained in public consciousness. This is there. You know, when you write, BCCI has done one more thing. Earlier it was batsman, so then it was batswoman, but that is never said batsman because it was a main-dominated cricket. Now it is said batter because the bowler is independent of gender. So batter is also independent of gender. Fielder is independent of gender. For the moment you say batsman, it means he is a male person. So that is how things. And you know, many of the books, many of the laws were earlier written as he because there were not many she in the competitive world. So nowadays you will find he or she. So when you write a letter, you should always address, if you don't know whether the officer is a male or a female, then it is proper to write dear sir or madam, or dear madam or sir. Not that you start saying dear sir. So this is one part of it. We have already overshoot our time. I don't know how much of it you are enjoying, but these are all theoretical things. You have to read to appreciate. I will share this first module, the PDF of the first module with Rashmi madam tomorrow or day after, and then you will get it. And next class is, I don't know whether it is tomorrow or day after. So we'll start with module 2. And any question? No, sir. Class was fantastic. You are giving us example one by one. So I am satisfied. Thank you. No, sir. Thank you so much. Okay. So good night. Good night, sir. Good night, sir. Good night, sir. Thank you, sir.